Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome back to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary Schools, our project of Iqra Education System. Dear students of class metric, this is another lecture on chapter number 14 poem, The Hand That Rocks the Cradle is the Hand That Rules the World. And today in this video lecture, we will discuss and write down reference to context. Reference to context, as known as RTC, is an integral part of your examination. I have previously told you, explained you that how to do this RTC or reference to context in online classes as well as in physical classes. Let's cover this RTC on chapter number 14 today. I am going to write down a couplet or a couple of couplets over here on the board. I have written down two couplets on the board. In fancy's the tender fountain, power may with beauty flow, mothers first to guide the streamlets, from them souls unresting grow. This is a reference to context number 1, and I am writing down the questions that follow these two couplets. Then I will ask you to answer these questions first, and in the end I will assist you how to write answers to the questions given in RTC or reference to context. The first question is, name the poem and the poet. This is a general question which is normally asked in RTCs, be that the RTC of poetry or prose. Name the passage or name the poem and the poet. And you people have to write the answer to this question very sensibly, as each question out of these three questions in RTC covers around 2 marks. So your answer should justify 2 marks, and you have to write in a way that should cover the whole purpose of the question. How can you answer this? Name the poem and the poet. Yes, a student said, the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world is the name of the poem, correct? And the poet, you remember? Yes, William Ross Wallace. But writing down this answer in such a simple way that the name of the poem is the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world, and the name of the poet is William Ross Wallace, may not justify 2 marks. So you have to write a proper answer, and I am going to exemplify you here on the board how you can answer this question. Here is the answer for question number 1. Name the poem and the poet. These given lines have been taken from a poem, The Hand That Rocks the Cradle is the Hand That Rules the World, of our book Secondary Stage English Book 2. This poem was written by an American poet, William Ross Wallace. This is a sensible answer or justifiable answer to the question, name the poem and the poet, getting 2 marks. Now I will write down the next question on the board, and we will discuss and write down the answer to these questions. Okay, question number 2 is, what does the writer mean in the 4th line? From them souls unresting grow. What does this line mean to the poet, or what does the poet mean by this 4th line in this couplet? Yes, I explained you this poem. Can you people answer this? From them souls unresting grow. From mothers it means, yes. You try. Okay, I will share with you. I will write down the answer on the board. You may look at it. This is answer to question number 2. In the 4th line, The poet means
that the mothers keep on working without any rest. When we say from them souls unresting grow, जब हम बात करते हैं कि माएँ जो हैं वो हर वक्त काम करती रहती हैं, जितनी भी मदर्स हैं माएँ हमेशा काम करती रहती हैं, और अपेरेंटली कोई ऐसे हमें दिखता नहीं है कि माँ, हमारी वालदा की अगर हम मिसाल लें तो हमने तो कभी नहीं देखा कि वालदा कोई स्पेसिफिकली ये कह कर के मैं बहुत थक गई आराम करें। नॉर्मली जो जैसे सब सोते हैं रात में, वालदाएँ भी सोती हैं, लेकिन हम दिन भर में कई मरतबा सुस्ताने और आराम करने की नीयत से लेट भी जाते हैं, कमर भी सीधी कर लेते हैं। बट वी सी that our mothers keep on working all the time, from morning till night. When we are leaving home in the morning, they are working. When we get back to home, they are working. When we sleep, they are working. When we wake up in the evening, they are working. So all the time they are working. So this actually is the nature of a mother, to keep on working, because she has so many responsibilities over her shoulders. माओं के ऊपर बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं ना घर की, खाना पकाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, हमारे कपड़ों को उठा कर रखना, तय करना और इस्त्री करना उनको. So many responsibilities she is fulfilling. Now I will write down question number 3 on the board. What does the word streamlets mean? In lines में इस्तेमाल हुआ हुआ एक लफ्ज़ streamlets. In the third line, mothers first to guide the streamlets. इस streamlet से क्या मुराद है? Streamlets commonly means small streams, but the poet uses this word here in the meaning of children. Mother is the first to guide the children. माँ की जो गोद होती है वो एक बच्चे की पहली दरसगाह होती है, तरबियतगाह होती है, और हर माँ अपने बच्चों को इब्तिदाई तौर पर तरबियत देती है, इल्म देती है, छोटी छोटी चीज़ें सिखाती है. तो स्ट्रीमलेट से मुराद यहाँ शायर की है वो बच्चे, माँ की औलाद, माँ के बच्चे. राइट, दिस इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नंबर 1. वी विल नाउ कवर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नंबर 2. Reference to context number 2. And the sacred song is mingled with the worship in the sky. Mingles where no tempest darkens, rainbows evermore are heard. These are 2 more couplets and we have to give the answers to the given questions. I will write down the first question here on the board and then discuss with you people. The first question is, what does sacred song mean? And the sacred song is mingled with the worship in the sky. यहाँ sacred song से क्या मुराद है? Sacred song means prayers of a mother. Her prayers for her children are sacred because they are out of love and sincerity. And this is without any doubt. When a mother prays for her children, she always prays for her children out of her love for their children and sincerity. She is always very concerned about her children. वालदाएँ जो है, माएँ जो होती हैं अपने बच्चों के लिए बहुत कंसर्न्ड होती हैं, और जब भी माँ के दिल से दुआ निकलती है वो बड़ी खुलूस वाली दुआ होती है और उसमें कोई रुकावट नहीं आती, वो डायरेक्ट अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है. अल्लाह, माओं की दुआ ना अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है. इसीलिए शायर ने माँ की दुआओं को यहाँ पर लफ्ज़ सेक्रेड सॉन्ग से रिप्रेजेंट किया है. नाउ आई विल राइट डाउन क्वेश्चंस नंबर 2 and 3 one by one. The next question is, how is the sacred song mingled with the worship in the sky? ये जो माँ की दुआएं हैं ये किस तरीके से अर्श तक पहुँचती हैं और किन की वर्शिप के साथ मिंगल होती हैं, मिल जाती हैं? The answer I am going to write on the board. You may look at the answer, then we will discuss it. How is the sacred song mingled with the worship in the sky? The prayers of a mother for her children are mingled with the prayers of angels in the sky.
The angels listen to and answer the prayers of mothers. जब माँ अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई भी दुआ मांगती है तो उस दुआ को आसमान के फरिश्ते भी सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं, और माँ के साथ मिलकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक, एक माँ अपने बच्चों के लिए दुआ मांग रही है, आप उसको कबूल फरमाएं। तो आप सोचें कि जब वालदा, हमारी वालदा जब हमारे लिए दुआ मांगती होंगी तो उन दुआओं को फरिश्ते भी सुनते हैं, और फिर फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई फलां की माँ ने उसके लिए दुआ मांगी है, अल्लाह पाक आप उस माँ की दुआओं को कबूल करें उस फला के हक़ में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उन दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। दिस इज़ वाई द पोएट इज मेंशनिंग हियर द सैक्रेड सॉन्ग इज मिंगल्ड विद द वर्शिप इन द स्काई, कि माँ की दुआएं और आसमान के फरिश्तों की दुआएं आपस में मिल जाती हैं। माँ जो भी दुआ करती है फरिश्ते उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, सुनते हैं और आंसर करते हैं। ठीक है, नाउ आई विल राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द बोर्ड। The last question of reference to context number 2 is, write down the message of this poem. Students, what do you understand by this poem, by the way? As I explained you this poem in 2 or 3 lectures ago, what did you understand? जी, क्या आप मुझे इस पूरे पोम का मैसेज बता सकते हैं कि राइटर या पोएट हमसे, हम लिसनर से, रीडर से क्या बात कर रहे हैं, हमें क्या बताना चाह रहे हैं? जी, वेरी राइट, वेरी गुड। पोएट हमें माँ की अजमत बताना चाह रहे हैं, माँ के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से माँ कुर्बानियाँ देती हैं और हमारे लिए दिन भर काम करती हैं, कोई आराम नहीं करती और हमारे लिए दुआएं करती हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं करती। और फिर क्या होता है आखिर में? आखिर में ये होता है, ये मेरा अपना सेल्फ एनालिसिस, आखिर में ये होता है कि जब वालदा हमसे कोई काम बोलती हैं तो हम उनको ना कर देते हैं, बल्कि सिर्फ ना ही नहीं करते, मुंह बनाकर कहते हैं कि भाई मैं नहीं कर रहा अम्मी। दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, यू ऑल आर हाफिज़ कुरान एंड यू पीपल मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू वन आयत ऑफ कुरान कि अपने माँ बाप के सामने, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, कभी भी माफ़ फरमाए, अपने माँ बाप के सामने उफ तक ना करो। डू यू नो व्हाट इट मीन्स? उफ तक ना करो, इसका मतलब कि मुंह बनाना या बदतमीजी करना या वालिदा के सामने या वालिद के सामने जोर से बोलना, तेज आवाज में बात करना, ये तो बड़े गुनाह हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमें उफ करने से भी मना फरमा रहे हैं। So we have to be very much concerned and meticulous about this thing, that we do not have to misbehave with our parents. I will write down the answer to question number 3, the message of this poem on the board. You may look at it and then we will discuss it. The poet in this poem tells us the blessings of mothers. He points out mainly that all our success and achievements are due to our mothers. Our mothers give sacrifices for our bright future. हमारी माएँ हमारे लिए sacrifice देती हैं ताकि हमारा मुस्तक़बिल bright हो. She remains concerned about us and our future. So what the poet is telling us, the blessings of mothers in this poem. So my brothers, that's all for today. But before we leave, I would like to give you some instructions. You people have to do these reference to contexts number 1 and number 2 in your registers. But when you're doing this work in your registers, you have to follow some instructions. Number 1, you have to draw the margin lines on the left hand side and the right hand side. Each margin line of ½ inch. Then you people have to mention the dates, English dates and Islamic dates. English date on the left hand side top and Islamic date on the right hand side top.
इन दो काम किए बगैर, ये दो काम किए बगैर आप अपना ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का या कोई भी काम स्टार्ट ही नहीं करेंगे। मेक इट योर हैबिट टू ड्रॉ द मार्जिनल लाइंस ऑन बोथ द साइड्स एंड मेंशन द डेट्स इंग्लिश एंड इस्लामिक। ये दो काम लाजमी करने हैं। जब भी आप काम करेंगे रजिस्टर में, दोनों मार्जिनल लाइंस और दोनों डेट्स को जरूर डालेंगे, जरूर मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने चूंकि टाइटल पेज इसका ऑलरेडी बनाया हुआ है और आप वर्ड्स मीनिंग भी कर चुके हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं, तो अब आपको दोबारा से इस चैप्टर नंबर 14 ऑफ पोम और द लाइन दैट टॉक्स द कैंडल वाली हेडिंग नहीं देनी है, बल्कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नंबर 1 एंड देन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नंबर 2, जो भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप कर रहे होंगे उसकी हेडिंग देनी है। उसके बाद आपको ये दो कपलेट्स कॉपी करने हैं। देन यू विल राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर, यू विल स्किप वन लाइन, देन यू विल राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन यू विल राइट डाउन आंसर। उसके बाद एक लाइन स्किप करनी है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर लिखेंगे। तो जब आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नंबर 1 करना चाहेंगे तो आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नंबर 1 जिस वीडियो में मौजूद है उसको पॉज करेंगे। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ना ये दोबारा से इसको प्ले करेंगे। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नंबर 1 पे वीडियो को पॉज करेंगे और ये जो मैंने कपलेट्स और क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए हैं ये आप कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नंबर 2 पर आएंगे और इसको आप पॉज करेंगे और फिर इसके जो कॉपलेट्स है और क्वेश्चन आंसर्स है वो आप कॉपी डाउन कर लेंगे रजिस्टर्स में। ठीक है, दिस इज योर क्लास वर्क, दिस इज योर क्लास वर्क। ओके, ये दो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है ये आपका क्लास वर्क है। आई एम राइटिंग डाउन योर होमवर्क। This is the homework I have written here. Do RTC number 3 from notes. You people have been provided with the English notes in your branches. You people have to open your English notes and find out where the reference to context are given, and then from there you can write down or you can do RTC number 3 for this chapter number 14 poem, The Hand That Rocks the Cradle is the Hand That Rules the World. Okay, my dear brothers, you people have to do your classwork and then your homework with the instructions as I have told you. You have to give the margin lines, draw the margin lines, and you have to mention the dates, and then you have to write headings and questions with black color and with black ink, and then you have to write the answers or the couplets with blue ink. आप मेरे opposite color यूज करेंगे। मैं आपको वक्तन फवक्तन टाइम बाय टाइम ये याद दिलाता रहूँगा कि that you have to use the opposite ink as I am using on the board. जैसे मैंने बोर्ड पर जो इंक मैंने यूज़ किया आप उसके ऑपोजिट इंक यूज़ करेंगे। अगर मैं कोई चीज़ ब्लू से लिख रहा हूँ तो आप वो ब्लैक से लिखेंगे, अगर मैंने कोई चीज़ ब्लैक से लिखी है तो आप वो ब्लू से लिखेंगे। Is that clear to you all? We will meet again in the next video lecture inshallah. Till then, take very good care of yourselves, all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.